as the horizon, as colorful as the rainbow, as enchanting as technology, faster, brighter, together. Let us make dreams come true. Let us be the torchbearer. Let us challenge our own potential. Let us explore, innovate, create. It is here we serve delicious success stories. It is here we paint reality even more beautiful than dreams. It is here where nature nurtures young minds. After all, education is the best way to build a nation and bring together students from different cultures, backgrounds, and beliefs. Students from 19 different countries are taking pride in building a stronger, committed, and super confident India. An India that will excel in all competitions and make it to the top without any stop. AP Goyal Shimla University, an international center of learning, having over 2,000 students from across 24 nations, getting a global exposure of more than 60-degree programs. AP Goyal Shimla University has something unique to offer to every student based on their interests, such as artificial intelligence, engineering, architecture, management, forensic science and biotechnology, law, journalism, design, hospitality, and many more. Here, courses and teaching methodology are designed specifically to prepare the students for future jobs. AP Goyal Shimla University, where nature nurtures young minds.
AP Goyal Shimla University, an international center of learning, having over 2,000 students from across 24 nations, getting a global exposure of more than 60-degree programs. AP Goyal Shimla University has something unique to offer to every student based on their interests, such as artificial So sorry for the delay, sir. There was some problem. Okay, so now let's start with the session without further ado. Good afternoon and a very warm welcome to everyone. Today's webinar on yoga and personality development is being conducted by AP Goyal Shimla University in collaboration with Venkateshwara Open University and Sri Venkateshwara University. Yoga is a gift of ancient Indian tradition to the world. It is a science long forgotten, but again revived due to the adoption of Western culture and Western theories. Yoga is a part of healing process and it has helped along even during times of COVID-19. It has become a ray of hope even during the times of pandemic. Jason Crandall has remarked that the nature of yoga is to shine the light of awareness into the darkest corners of the body. International medical experts have said that these exercises strengthen the breathing system and should be practiced regularly. Yoga has been practiced by yogis and swamis since the Dwapar Yuga, which not only made them physically fit, but also helped in their mental growth and development. It helped them maintain peace of mind, giving them the nerves to master important values and techniques that cannot be thought of by the common masses. Yoga practice in itself makes one's mind compassionate, calm, and as deep as an ocean. On behalf of the university, I take extreme pleasure to welcome
Mr. Jay Prakash Singh, Inspector General of Police, Armed Police in Training, Shimla, in the gracious presence of Professor Dr. R.K. Chaudhary, Vice Chancellor Venkateshwara Open University and Pro-Chancellor A.P. Goyal Shimla University, and Honorable Vice Chancellor A.P. Goyal Shimla University, Professor Dr. Ramesh Chauhan, along with the other dignitaries. I welcome you all here. Before proceeding further, I would like to introduce our guests for the webinar. Mr. Jay Prakash Singh ji, basically originating from Bihar, graduated from Patna University. Sir, you have completed your master's from Osmania University, Hyderabad. You have studied in the IIM, Lucknow, and Cambridge University, England. You have served in Indian Army as commissioned officer for about 7 years before qualifying IPS. As IPS, besides holding many field assignments, you have worked with 2 governors of Himachal Pradesh, with Dr. Suraj Bhan and Shri V.S. Kokji. You have been the private secretary to the Union Minister in the Government of India. You have traveled to 12 to 13 different countries in the world, and since 2018, you have been serving Himachal Pradesh as the Inspector General of Police. You have studied Sanskrit, Vedic literature, Upanishads, Purans, Bhagavad Gita, and Ramcharitmanas. You also have had keen interest in spirituality. You are also a reputed regular writer in the National Daily on spiritual and cultural subjects. Sir, we are honored to have you here with us today. With this introduction, I would like to invite Honorable Vice Chancellor, Venkateshwara Open University, and Pro-Chancellor A.P. Goyal Shimla University, Professor Dr. R.K. Chaudhary, sir, to please address our audience and deliver his warm welcome to our esteemed guest. Okay. Namaskar. Good afternoon, and a warm greetings from the A.P. Goyal Shimla University, Venkateshwara Open University, and Sri Venkateswara Universities. It's a really broad privilege to have a webinar today, Yoga and Personality Development, योग से व्यक्तित्व का विकास. The topic specifically has been chosen. There are 2 reasons. One is that you know that just this week on 21st, the world has observed the International Yoga Day. Honorable Speaker was occupied on that day, though we have invited him. But because of, already Prachi has stated all the laurels of the Honorable Sri Jay Prakash Singh ji. So he was occupied. Then we have planned, and today is the very eventful day when we are all together to have a very, very valuable webinar, very, very valuable talk of JP Singh Sahab ji. We sincerely extend our apology if any inconvenience has come because of the, all in a sudden exactly at 12 o'clock, the weather of the Shimla has been changed and the electricity has gone, and so this is also a respite. Basically, Shimla was also heating, and it was a very rainful respite to the Shimla, and it has made a climate and weather very pleasant. So that's greetings to all of you also who are in Shimla, and there are the students and faculties who have participated from various parts of the country. Dr. Prachi has already said about our honorable speaker, and you know that he is a decorated police officer. He has served with the Indian military, and he is a writer also. He has been very civilian type of the assignment with the governor and other kind of the assignments. So these things are the various laurel in the feather of there are very feather in the cap of JP Singh Sahab. But the best part, which I will like to
here draw your kind attention that he is of course decorated, I mean to say, cop. But basically what I feel and what kind of the vibrations I got whenever I met him, he is a rarest of rare kind of the decorated cop who has a very different kind of the vibes and vibrations once you will meet. And it gives us a vibration of the scent. You will find that a very fine human being, and who is a really, I will say that he is a real research scholar as well, where he is trying to explore and find out the ways of the problem the society, even the police, even the administrations are facing, and he has his own different view, which we can feel it with his kind of the writings and columns which are regularly publishing in leading newspaper, and his views has been expressed at different times. So I feel it's a matter of proud privilege for me to know such a great person, I will like to tell you, which has a really knowledge seeker. And you will, rarest of rare, you will find that a cop is so much spiritual, and then he has a separate approach of any problem which the world is facing, with the youth is facing, and the contemporary period we are facing. So this is the reason when I requested to the JP Singh Sahab to talk with our students and faculty at this very crucial time when the whole world is under pressures, under stress because of the lockdown, because of this pandemic. So I'm not going to speak because he is such a learned speaker, he is before us. So we will rather learn from him and rather listen to him. You used to listen me regularly, but the topic which you have taken, yoga and Vyaktittva Vikas, I will like to draw the kind attention of the young people who are here. Our faculties are also mostly very young people. We have to understand today, because that Singh Sahab will definitely let us know. This is basically yoga, which has become yoga by going to the US and European countries, and that's why now it is observed as a Yoga International Day. Yoga se Vyaktittva Vikas, basically the yoga which we know, and there are so many scriptures are there where it has been cited, but Patanjali is the most established way of the yoga which most of the people are practicing. And that has also been, I believe, that wrongly interpreted. Mostly we people are get attracted with the yoga for our body level, and we feel that it will rejuvenate us in the form of the physical form, but we have to understand that yoga is not the what I believe and what I am trying to learn to know, that yoga is a way through which you can actually know yourself, and once it is the way through which we can achieve the self-actualizations, self-realizations, and basically I feel that this is the way through which you can know yourself as a soul. So it is not only with the body genetics or the DNA which know, but it goes beyond to the genetics which we are. It is talking about the soul genetics. So this is the very vast area, and you know that there are certain things which has been scientifically established in yoga, and that's why the world has accepted, and now we are observing the Yoga International Day. It is directly giving you various benefits, which happens to be instantly, and that's why you know the youth are attracted and they are trying to do. But basically, if we really practice the real yoga, it can take us beyond to different level, where actually we will be able to understand who we are, from where we have come. And I define that yoga is a union through which we can connect our soul with the body. So this is the word. I am not going to speak much. I am very, very thankful, Singh Sahab, that you have given opportunity to us to listen you and to get enlightened. Today, because of your personality, the various people have connected with us. I'm looking, Mr. Runesh Haji is also from Haryana. He has joined. He is the chief bureau of the Swadesh newspaper. Runesh Haji, you can, today Singh Sahab is there. You can get connected. He is the regular columnist with the Sahara. And for Swadesh also, you can catch him.
So with this word, I am expressing my sincere thanks to Singh Sahab to be ready and today to be with us, to enlighten us. Thank you, sir. And we are really, really grateful to you for giving us your precious time. We look forward to you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. With this, now I would like to invite sir to please deliver his speech on how yoga can be helpful in personality development. Thank you, madam. Am I audible and visible? Yes, sir. Okay. सबसे पहले मैं एपीजे विश्वविद्यालय शिमला और डॉक्टर आरसी चौधरी कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। आज की वार्ता का विषय है योग से व्यक्तित्व का विकास। यह एक अहम मुद्दा है और इस विषय पर गहन विचार करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि योग क्या है, योग के कितने आयाम हैं, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के कितने आयाम हैं और योग विद्या का अनुपालन करने से व्यक्तित्व निर्माण कैसे होता है और व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। 2014 में भारतीय मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया और अमेरिका और यूरोप सहित करीब 177 देशों के समर्थन से प्रस्ताव पारित हुआ और 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। शासकीय व्यस्तता की वजह से मैं उस दिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका, इसलिए इस कार्यक्रम को अलग से आज रखा गया है। अन्य विद्याओं की तरह योग विद्या की उत्पत्ति भी वेद से ही हुई है। वेद सभी प्रकार की विद्याओं को समाहित किए हुए है। सभी विद्याएं वेद से ही निकली हैं, चाहे सांसारिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, पदार्थ विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, ये सभी विद्याएं वेद से ही निकली हैं। उसी तरह से योग विद्या का मूल स्रोत भी वेद ही है। ये विद्या वेद के अलावा उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, वेदांत, पाणिनि, भगवद गीता और बौद्धिक और जैन दर्शन में भी मिलती हैं। इस तरह से हमारी वैदिक संस्कृति से लेकर और आधुनिक काल तक योग के बारे में वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। अब अगर इसको हम देखें तो उसके बाद आज से करीब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में योग विद्या को न केवल स्थापित किया, उसके सर्वोच्चता की भी बात की। भगवद गीता में योग विद्या के बारे में और योग के बारे में अनेक वर्णन आए हैं और स्वयं श्री कृष्ण ने, जैसे अध्याय 2 श्लोक 48 में बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समय भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में योग शब्द का 2 बार वर्णन हुआ। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो, और अंत में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समत्व ही, समता ही, संतुलन ही योग है। योगस्थ क्या है और संतुलन क्या है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। आगे श्री कृष्ण अध्याय 2 के ही 50वें श्लोक में कहते हैं,
बुद्धि युक्तो यहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम का भावार्थ हुआ कि कर्म की कुशलता ही योग है। अगर कर्म को कुशलता पूर्वक आप निष्पादित करते हैं तो ये योग है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हर कर्म को कुशलता पूर्वक निष्पादन करना योग नहीं है, क्योंकि अगर कोई अच्छे से चोरी करता है तो उसको तो योग नहीं कहा जा सकता। सो फिर इसका उत्तर इसी श्लोक में पहले लाइन में मिलता है, जब भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्तो यहाति है। तो बुद्धि युक्त होकर जब आप कर्म का निर्धारण करते हैं और उस कर्म को कुशलता पूर्वक निष्पादित करते हैं तो वो कर्म है। सवाल उठता है बुद्धि युक्त क्या है? सो आगे हम चर्चा करेंगे, उसमें देखा जाएगा कि 5 कर्मेंद्रियां होती है व्यक्ति की और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं 10, और इन 10 का राजा होता है मन 11वां। इसीलिए मन को इंद्रियों का राजा कहा जाता है और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति मन के अनुसार काम करना चाहता है। लेकिन योग साधना के द्वारा जब व्यक्ति अपने बुद्धि को मन पर स्थापित कर देता है और मन को नियंत्रण कर देता है तो सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बुद्धि के अनुसार चलती है। यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की है और यही स्थित प्रज्ञता बुद्धि युक्तता कहलाती है, जिसको एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि युक्तो जहाति कहा है। इसका मतलब है कि ये महत्वपूर्ण है कि हम कर्म का निर्धारण करें कि कर्म ये शास्त्रीय रूप से उचित है या अनुचित है, और जो उचित कर्म है उसी को कुशलता पूर्वक जब हम संपादित करते हैं तो ये योग की श्रेणी में आता है। योग की महत्ता और सर्वोच्चता को श्री कृष्ण जी ने अनेक बार चर्चा किया है और अध्याय 6 में तो उन्होंने इसकी महत्ता को इतने ऊंचाई पर ले गए हैं कि योग दर्शन को ही सर्वश्रेष्ठ दर्शन स्थापित किया है, बताया है। और बोलते हैं 6ठे अध्याय में, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यो च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भाव है कि हे अर्जुन, तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी होता है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी होता है, और जो सांसारिक कर्म या सकाम करने वाले कर्म योगी होते हैं इससे भी श्रेष्ठ योगी होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं और वहां योगी होने की बात करते हैं, आमतौर पे आदमी समझता है कि योग का अर्थ केवल ईश्वर से मिलन या ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति है, और जिनको सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करनी होती है उनको योग से ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन योग की महत्ता और सर्वोच्चता स्थापित करके अर्जुन को योगी बनने का उपदेश देकर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि योग करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना सांसारिक तरक्की के लिए योग आवश्यक है। जब तक आप योग नहीं करेंगे तो सांसारिक रूप से भी आप सफल नहीं हो सकते, और इसीलिए उन्होंने तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो की बात कही है। कालांतर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। आमतौर पे योग का अर्थ जोड़ने से जाना जाता है। ये युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एकजुट करना। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब है कि चित्त की वृत्तियों
का निरोध करना योग है। चित्त की वृत्तियां क्या हैं? आदमी का जो मन है सबसे चंचल होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जिस अर्जुन ने कहा है कि ये मन का जो वेग है सैकड़ों घोड़ों के वेग को जोड़ दिया जाए तो उससे भी तेज है, इसका कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? उस पर भगवान बताते हैं कि योगाभ्यास से ही मन की गति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे जैसे आप उदाहरण देते हैं कि क्रिकेट का मैच देख लीजिए, एक अंपायर होता है और तेज रफ्तार से बॉल आता है, कई बार अंपायर को पता नहीं चलता है कि आउट है कि आउट नहीं है, तो फिर उस बॉल को और विकेट पे लगा है या नहीं लगा है तमाम चीजों को स्लो मोशन में देखना पड़ता है, इसलिए थर्ड अंपायर की जरूरत होती है। उसमें बॉल की गति को और सभी चीजों को धीरे धीरे दिखाया जाता है। तो जब आप मन को नियंत्रण करते हैं, जब योग विद्या द्वारा, योग साधना द्वारा मन को नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। अदरवाइज मन की गति बहुत तेज होती है और कई बार आपको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, आप गलत निर्णय कर लेते हैं। तो योग से आपकी तृतीय नेत्र खुलती है और आप थर्ड एम्पायर जैसा हो जाते हैं और आप सही और गलत का निर्णय कर लेते हैं। योग के 8 आयाम हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आमतौर पर आसन और प्राणायाम को ही लोग योग समझ बैठते हैं, लेकिन ये योग के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन ये पूर्ण योग नहीं है। योग करना है तो आप उसको श्रेणीबद्ध रूप से ही किया जा सकता है योग विद्या को, और उसमें पहला यम आता है जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये यम के सिद्धांत हैं। यम के सिद्धांतों का काफी प्रभाव जैन धर्म और बुद्ध धर्म पर पड़ा और महात्मा गांधी ने भी इसका पालन किया, अनुकरण किया। यम से शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है और व्यक्ति की ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। जो दूसरा आयाम है नियम, नियम में शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आता है। इससे व्यक्ति में दिव्यता और पवित्रता आती है। आसन, आसन जैसा कि आप जानते हैं, स्थिर सुखम आसनम, आसन से शरीर में मजबूती होती है और हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है। उसी तरह से प्राणायाम, प्राणायाम में प्राणवायु का विस्तार होता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार में जो हमारे शरीर की तमाम इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन सबको अपने वश में किया जाता है और इसको प्रत्याहार कहते हैं। इसके बाद आता है धारणा। किसी एक बिंदु पर, चाहे वो कोई तारा हो, चाहे चंद्रमा हो, दीपक की लौ हो या नासिकाग्र हो, स्वयं की भ्रिकुटी हो, किसी एक जगह पर अपने ध्यान को, अपनी चेतना को केंद्रित करना धारणा कहलाता है। और जब उस एकाग्रता को हम लंबे समय तक करते हैं, लंबे समय तक उस चेतना को केंद्रित करते हैं बिंदु पर, सतत प्रवाह में रहते हैं, तो वो ध्यान कहलाता है। आधुनिक विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि ध्यान से अनेक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बड़े बड़े होटलों में या रिजॉर्ट्स में भी या हर जगह मेडिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पे यात्रियों को इसकी सुविधा दी जाती है, क्योंकि इसका लाभ वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो गया है। जब ध्यान भी लंबे समय तक किया जाता है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति की चेतना होती है वो मन के साथ बुद्धि में विलीन होने लगती है और फिर बुद्धि आत्मा में विलीन हो जाती है
और इस अवस्था में व्यक्ति को स्व के अस्तित्व का तो बोध होता है, लेकिन बाकी चीजों का बोध खत्म हो जाता है, और ये ध्यान की स्थिति है। जब ध्यान की सतत प्रक्रिया के बाद व्यक्ति अपने स्व को भी भूलते हुए पूरी तरह से ध्येय पर में लय हो जाता है, विलय हो जाता है, और इस स्थिति में व्यक्ति की चेतना ध्येय की चेतना से एकाकार हो जाती है, तो इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जो परम सुख, परम शांति और परमानंद की स्थिति होती है। यही स्थिति सिद्ध योगियों को प्राप्त होता है। ये अष्टांगिक योग के 8 आयाम हैं, जिसका वर्णन मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे हम देखेंगे कि एक आयाम से व्यक्तित्व के निर्माण में और विकास में क्या लाभ होता है। योग विद्या को महर्षि पतंजलि के बाद अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने विकसित करने में योगदान दिया। शंकराचार्य जी से लेकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु परमहंस, योगानंद और स्वामी विवेकानंद आदि ने योग विद्या के विकास में अहम योगदान दिया है। और आज दुनिया के करीब 200 देशों में लोग योग विद्या सीख रहे हैं और योग विद्या का अनुपालन कर रहे हैं, और करोड़ों लोगों को इससे लाभ हो रहा है। आज योग विश्व में एक ब्रांड बन गया है और योगा टूरिज्म भी शुरू हो गया है। जहां तक व्यक्तित्व की बात है, व्यक्तित्व को अलग अलग विद्वानों और दार्शनिकों ने अपने अपनी तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे स्वामी विवेकानंद की जो योग के बारे में व्याख्या है वो सबसे समीचीन और उचित प्रतीत होती है। उन्होंने व्यक्तित्व के मुख्यतः 5 पहलू बताए हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और आध्यात्मिक विकास होता है, और इसके साथ साथ इन सारे पहलुओं में सामंजस्य स्थापित होता है, तो इससे व्यक्तित्व में पूर्णता आती है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि केवल शारीरिक विकास से या केवल बौद्धिक विकास से आदमी का व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होता। अगर केवल शारीरिक और बौद्धिक विकास हुआ तो आपकी जो तरक्की है वो सांसारिक तरक्की होकर रह जाती है, और हो सकता है कि आपके लिए वो तरक्की हो, लेकिन वो तरक्की समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए घातक साबित हो सकती है। इस तरह के कई उदाहरण समाज में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए जैसे भस्मासुर को देख लीजिए, या रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए। इन लोगों ने तपस्या करके, प्रयास करके कठिन विद्याएं तो प्राप्त की, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उस रूप में नहीं की कि उनको मानव समाज के कल्याण के बारे में उनको सोचना चाहिए था। वो नहीं किया, जिसकी वजह से उनका जो ज्ञान है, उनकी जो तपस्या है, वो समाज के लिए और मानवता के लिए हितकारी साबित नहीं हुई, और अंत में वो अपने सफलता को अस्थायी नहीं कर सके और स्वयं उनका भी नाश हो गया। तो जब हम सारी चीजों को में उन्नति करते हैं तो हमारी सांसारिक तरक्की भी होती है और आध्यात्मिक तरक्की होती है, और तब व्यक्तित्व में पूर्णता आती है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने जो अध्याय 2 के 48वें श्लोक में कहा कि समत्वम योग उच्यते योगस्था कुरु कर्मणि, योगस्थ होकर कर्म करो। जब आप सिद्ध सिद्धियो समय भूत्वा समत्वम योग, जब आप योग के नियमों का पालन करते हैं, जब सत्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं,
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन करते हैं, जब तमाम नियमों का पालन करते हैं, जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होती है, तो आप न केवल स्वयं के कल्याण के लिए बल्कि अपने परिवार, समाज, मानवता, राष्ट्र सबके कल्याण की आप कामना से आप काम करते हैं, और तभी जाकर आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास माना जाता है। अन्यथा एक तरफा विकास आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और समाज के लिए तो खतरनाक होता ही है। जहां तक योग के नियमों का व्यक्तित्व के विकास पर योगदान की बात है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो शारीरिक क्षमता का विकास आसन, प्राणायाम इत्यादि से होता है। जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर के तमाम अंगों में सुदृढ़ता आती है, और उसमें लोच आता है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और हम स्वस्थ होते हैं। आसन और प्राणायाम से हमारी शारीरिक क्षमता का विकास होता है। जो मानसिक क्षमता के विकास की जो बात है, तो अभी हमने जब वर्णन किया धारणा में मुख्यतः एकाग्रता पर जोर दिया जाता है। तो जैसे विद्यार्थी के बारे में कहा जाता है कि उसमें एकाग्रता होनी चाहिए, जब हम धारणा का अनुपालन करते हैं तब व्यक्ति में एकाग्रता का विकास होता है, और इस तरह से योग का ये जो आयाम है वो हमारी मानसिक क्षमता का विकास करता है, और ये धारणा और ध्यान से संभव हो पाता है। यह मन को शांत और बुद्धि को स्थिर करता है, जो कि आदमी को सफल होने के लिए और सफलता को दीर्घायु प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ साथ आज के व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में कदम कदम पर बहुत स्ट्रेस होता है, तो जब मन शांत और बुद्धि स्थिर होती है तो उससे हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में भी बहुत सुविधा होती है। यम, नियम और प्रत्याहार का पालन करने से हमारे व्यक्तित्व में नैतिकता भी आती है। जब हम सत्य का पालन करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी का धन हम लेने की इच्छा नहीं रखेंगे और अधिक संचय करने में विश्वास नहीं करेंगे, तो हम जो तमाम बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इससे भी बचते हैं हम, और हमारा नैतिक विकास होता है। हम दूसरे के धन को अपना धन और दूसरे की किसी भी वस्तु को लेने की मन में भावना तक नहीं लाते। कहते हैं मातवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। दूसरे की पत्नी को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान, और सभी जीव को अपने समान जो देखता है वही पंडित है। योग जो है एक साधारण व्यक्ति को विद्वान बनाने की ओर ले जाता है। योग आसुरी प्रवृत्ति से दैवी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। योग तमोवृत्ति से, योग सतोगुण से, योग रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाता है, और यही योग विद्या का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अब अगर हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं तो धारणा और ध्यान के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास करके हमारा बौद्धिक विकास भी होता है और स्वास्थ्य लाभ होता है। और इसके बाद जो अंतिम आयाम है योग का, समाधि में जैसा कि हमने बताया, यह आध्यात्मिक विकास का चरम बिंदु है। और योग विद्या में जब हम सातों आयामों को सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं तब ये समाधि की स्थिति होती है। इस समाधि की स्थिति में आदमी हर प्रकार के रोग, व्याधि, तनाव से मुक्त होकर और संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में होता है, और आत्मोन्नति करके परम शांति, परम ज्ञान और परमानंद को प्राप्त करता है। ये अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति का। जो हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परिकल्पना की गई है, समाधि की अवस्था में
मोक्ष की अवस्था होती है। जो समाधि को प्राप्त करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि केवल मोक्ष को ही नहीं प्राप्त करना है। मोक्ष जो है परलोक में जाने से पहले परम गति प्राप्त करने की बात है, लेकिन इहलोक में सांसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए भौतिक जीवन में भी हमें सफल होना जरूरी है, और इसमें ये योग के सिद्धांत अत्यंत ही कारगर साबित होते हैं। जैसे योग से सकारात्मक विचार आते हैं, और जब जीवन में सकारात्मक विचार आते हैं तो वो आपको सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। योग से आत्मबल बढ़ता है, और जब आत्मबल बढ़ता है तो आपके जीवन में चिंता और निराशा का अंत होता है, और आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हुए काम करते हैं और आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। उसी तरह से योग से आत्मिक शांति मिलती है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, चित्त शांत रहता है, और जब चित्त शांत रहता है तो आप अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको सफलता मिलती है, और वो सफलता अस्थायी भी होती है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। जैसे आप किसी महत्वपूर्ण असाइनमेंट पे हैं, आपका 2 साल 3 साल का टेन्योर है, लेकिन अगर 1 साल आप बीमार ही पड़ गए तो 1 साल का तो आपका ऐसे ही कोई कार्य नहीं हो पाया, तो आपका 2 साल का ही काम रह जाता है। संगठन के लाभ में चाहे आपके लाभ में काम रह जाता है। इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर आपने व्यक्ति की अगर 100 साल की आयु है, 70 साल निरोग रहा और 30 साल अगर वो बीमार पड़ गया तो फिर तो बिस्तरा पकड़ लिया, और वो 30 साल तो कोई काम कर नहीं सकता है, आधे टाइम अपने स्वास्थ्य ही लेकर जूझ रहा है। तो जब आप योग मार्ग का अनुपालन करते हैं और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो आप अपनी पूरी कार्य क्षमता को अपने दिए हुए कार्य की तरफ और अपने लक्ष्य की तरफ लगाते हैं, और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो स्वास्थ्य लाभ है योग का, ये भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर से ही आप धर्मयुक्त कर्मों को भी कर सकते हैं। इसलिए अच्छे काम करने के लिए भी स्वस्थ रहना जरूरी है, जो कि योग से प्राप्त होता है। मन पर नियंत्रण, जैसा कि मैंने पहले कहा कि योग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। मन बहुत चंचल होता है। जैसे किसी तेज घोड़े पर अगर कमजोर घुड़सवार हो तो वो काबू में नहीं आता, और घोड़ा चारों तरफ इधर उधर भागता है, आप घोड़े पर बैठे हुए वहां जाते हो जहां घोड़ा आपको ले जाता है। तो जब योग विद्या द्वारा बुद्धि को मन पर स्थापित करते हो तो आपका मन वैसे चलता है जैसे एक सफल घुड़सवार घोड़े पर बैठकर अपनी इच्छानुसार घोड़े को अपने गंतव्य तक ले जाता है। तो ये योग की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप मन की चंचलता पर विजय करते हो। जो चंचल मन है वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और फिर अपने बुद्धि के अनुसार अपने सारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अपने नियत कर्म की तरफ आप उनको प्रोत्साहित करते हो, और जिससे कि श्रेष्ठ और सकारात्मक रिजल्ट आता है। देखिए, भौतिक जीवन में भी ये आवश्यक है कि हम ना केवल अपने टीममेट से, हमारे अपने सुपीरियर से भी अच्छा संबंध रहे, हमारे अपने जो जूनियर कलीग्स हैं उनसे अच्छा संबंध रहे, परिवार में अच्छा संबंध रहे, मित्रों से अच्छा संबंध रहे। और जब हमको सबका सहयोग मिलता है, सबको हम में फेथ होता है, हमारे आदर्शों में, हमारे जीवन शैली में, हमारी पद्धति में, हमारे सिद्धांतों में जब सबको फेथ होता है, तब हमें सबका सहयोग मिलता है, और इसी को बोलते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन। विनिंग कॉम्बिनेशन सही धारणा, प्रत्याहार और ध्यान से आता है। और जब हम सांसारिक तरक्की के साथ साथ अपने आध्यात्मिक उन्नति को भी जोड़ते हैं, तभी हमारा जो सुख है, शांति है और समृद्धि है, वो अस्थायी हो पाता है। योग से व्यक्ति
ऋषि मुनियों जैसा भीतर से शांत होता है और बाहर से उसके शरीर में सक्रियता रहती है, लेकिन वो भीतर से प्रशांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जब मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर रहती है और शरीर में सतर्कता होती है, सक्रियता होती है और साथ साथ आध्यात्मिक रूप से उसकी चेतना जागृत होती है, तब ये जो संगम है वो सही में विनिंग कॉम्बिनेशन है। और आप एक ऋषि मुनि जैसा भीतर से शांत होते हैं, लेकिन बाहर से एक सफल प्रबंधक जैसा आप काम करते हैं, एक सफल नेता जैसा काम करते हैं, आप में सफल नेतृत्व की क्षमता आती है, सफल प्रबंधक की क्षमता आती है, तो आप सचमुच में राजयोगी और राजर्षि होते हैं, जैसे राजा जनक थे, राजा राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे। इस लेवल के आप व्यक्ति बन सकते हैं। ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। सो ये योग द्वारा संभव है। सो योग न केवल हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और आध्यात्मिक विकास करता है, योग हमको एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन देता है जिससे हम इस संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं और जो जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष और कैवल्य, उसकी भी प्राप्ति कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में योग की भूमिका को इतना तवज्जो दिया है, इतना उसको प्रोत्साहित किया है, और व्यक्तित्व के जो 5 आयाम उन्होंने बताए हैं, जैसे आत्मविश्वास होना चाहिए, एक सफल व्यक्तित्व में क्या क्या होना चाहिए, जैसे आत्मविश्वास हो, आत्मनिर्भरता हो, आत्मज्ञान हो, आत्मसंयम हो और आत्मत्याग हो। और इन जब पांचों का अनुपालन होता है और पांचों में आपस में तारतम्य होता है, तो व्यक्ति न केवल अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करता है, न केवल अपने व्यक्तिगत उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करता है, बल्कि उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म स्वयं के साथ साथ उसके परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी होता है। तो निश्चय ही जो योग विद्या है, योग से निवारण भी है और तारण भी है। योग के माध्यम से हम तमाम प्रकार की न केवल व्याधियों को रोक सकते हैं, शरीर में आने वाली व्याधियों को रोक सकते हैं, बल्कि अपना मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकते हैं, और साथ साथ हम आध्यात्मिक विकास कर उस स्थिति में पहुंचते हैं कि हमें हमारा तारण हो जाता है, हमें तरण हो जाता है, और हमारा जो परलोक है, मृत्यु के बाद का जो जीवन है, वो भी हमारा श्रेष्ठ होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक जगह कहा है कि नो यत्र भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तत्र धाम परम मम। जहां पर कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई किसी प्रकार की अग्नि नहीं है, किसी प्रकार का ताप संताप व्याधि नहीं है, और जहां जाकर पुनः वापस नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। इस परम धाम की प्राप्ति योग विद्या से ही संभव है। योग हमें न केवल अर्जुन की तरह इस संसार में विजयी बनाता है, बल्कि इस संसार से परे जो सच्चाई है, इस संसार से परे जो जीवन है, उसमें भी हमें सफल बनाता है और परम पद की प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। योग एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जो हमें संसार में भी सफल बनाता है और परलोक में भी सफल बनाता है। तो आइए हम सभी योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं इस शुभ अवसर पर पुनः एपीजे विश्वविद्यालय, डॉक्टर आर.के. चौधरी साहब और तमाम लोग जो जूम के माध्यम से और अन्य श्रोतागण जो सभी जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें सुना और
हमें बोलने का मौका दिया। सो अंत में मैं ये कहूँगा कि इस विषय पर अगर कोई प्रश्न कोई करना चाहता है तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। Thank you so much, sir. So, I hope that whatever sir has shared with us today, it was a very nice talk, and something that we really should get to listen to at times. And it is very obvious that the younger generation should be aware of all these things. And we are not so aware of all these things, sir. So thank you so much for enlightening us. So moving on to the questions, I request anybody who has to ask any question from sir, you can post your question in the chat box. So we'll be waiting for some time. So till we get in the questions and the questions get dropped in, so let's move further. And I would like to invite our Honorable Vice Chancellor, AP Goel Shimla University, Professor Dr. Ramesh Chauhan sir, to please deliver his valuable ideas, conclusive remarks, and thank you note. Namaskaram. Very good afternoon. Namaskar to JP Singh sir. Actually, sir, by listening you, let me tell you, let me confess, that we are very, very happy, sir. And the things which you told, they are very common day to day, which we should apply in our mind, But the youngsters, the generation, they are not very much acquainted with all these things, So today's lecture was very, very meaningful, and I feel that it has gone to the very heart of everyone, and we are very happy, sir. As we all know, as Dr. Prachi told, that sir, he has studied from very prestigious institutes, including Cambridge University in the United Kingdom, and he has served with the two governors of Himachal Pradesh, and presently, with the Inspector General of Police in Himachal Pradesh. Very rare combination, sir, in the police, and on the other side, totally he has got hold of the yoga, I mean the inner knowledge, which Raja Janak and so many other luminaries like Vivekanand, Yoganand, because these people also through reading and through contemplation, they have achieved all those levels in spirituality. So his combination of working in the police and simultaneously a spiritual person is really, it's very commendable and really inspiring for all of us. And here I welcome our Pro-Chancellor, sir, Dr. R.K. Chaudhary, sir, who has a dual charge. At present, he is Vice Chancellor of Venkateswara Open University also. It is because of sir's, efforts that all these things are happening, We are just following his wisdom, sir, here in this university, AP Goel Shimla University. And here in this webinar, we have Arish Jha, sir. He is a very renowned and very eminent journalist, and he had visited the university and Department of Journalism, Mass Communication. I welcome him also, sir, that continuously in different webinars, he has been attending all those webinars, And we have here Dr. Ashwini Sharma, sir, also. He's a guest faculty. He's a professor in the Department of Journalism, Mass Communication. In many ways, he's with us, sir, in the AP Goel Shimla University. I feel, that I have been interested in spirituality, So 1, 2 things I would like to say, as a sir already he has told so many things, I feel it's a sort of a man management, ultimately, how a person manages himself in positivity, We have not to leave anything, And on the very first thing, when we speak of yoga and spirituality, probably we feel that we have to leave everything and somewhere we have to go in the forest or wear some dhotis and some, tilak, or do some other, formalities and all rituals, That's not required. It's a conditioning of mind, as a matter of fact, We have to purify from
within, and we have to understand the constitution which this body has, the inside components which we call antakarana, there are 21, 26 antakarana, all components, how to harmonize them, that's very important thing, sir has told. But many foreign students, others may not be able to comprehend it in Hindi, As a matter of fact, you have not to do anything, If you just rever your parents, if you do your duty, you are a student at this stage. If you study and behave like a student, you should not behave like a householder. If at this stage you behave like a householder, so how can we can say that you are in yoga or you are in yoga? And yoga is not only merely a halasana, sarvangasana, or sirsasana. We are sitting in some asanas, That is not a yoga. As Sir told, yoga is just a union with the higher personality which is within, at the level of physical body, at the level of mind, at the level of Atma, Ultimately, Atma is a common as one thread in the garland, Nobody sees it, We do not see the foundation of the building. We do not see the roots of the tree. However, we because that our concentration doesn't go there, which is the actually reality, So I feel that our hands, our head, our heart, it should come together, and by some means, this thought, word, and deed, we have to bring in harmony, And that's the yoga, And for students, I can say that if you breathe properly, if you have deep breathing, even when you are walking, even when you are working somewhere, you can breathe. Nobody can stop you breathing. Deeply, So if you breathe, even you will be energized. As he had told, health is a very important thing. Unless there is health, we cannot do even small things. What to speak of spirituality. As a matter of fact, health is a very important component. So this yoga is in whatever level and wherever, in whatever circumstances we are, we should start it, We should start toward positivity. We have to just identify our weaknesses at our own personal level, and then we have to remove them ourselves, So, sir, once again, on behalf of AP Gul Simla University, sir, I thank you very much. All my staff, my registrar, Dr. Anil Pal, my deans, my HODs, faculties, all students, sir. We are really grateful to you that because of our Pro-Chancellor, sir, Dr. R.K. Chaudhary, sir, because of him that you are here in this webinar, and such a personality, such a spiritual personality, we have gained a lot, from today's talk. And definitely 1-2 lines, definitely all our students, faculty, something they must have gained out of it, and for sparing your valuable time, sir, for this webinar, really thankful to you, sir. Namaskaram, sir. Thank you so much, sir. Now, moving on to the questions, we have with us the first question from Dr. Ashwini Sharma. So, sir, I request you to please unmute yourself and ask your question. Thank you very much. Thank you, Dr. Prachi. Honorable Pro-Chancellor, sir, Dr. Ramesh Chaudhary, Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. Ramesh Chauhan, and all faculty members of our HOD. And my thanks to Dr. GP Singh, such a wonderful talk and linking yoga with spirituality and our culture and ethics and all that. So it was really great, though I joined little bit later, but I was very eager to listen to you, sir. And my first question, or rather the only question I will like to pose, sir, how do you train your men to manage stress? In the police, there is a lot of stress level, especially in the pandemic. And we have been hearing certain incidents that policemen also lose their temper. So how you educate them or train them, being a person who is in charge of the training, that they should manage their stress and instead convert their stress level into a strength, into better management of their duties and their mind and body. So I would like to listen few words from you, sir.
Thank you very much for a wonderful question, Mr. Ashwini Sharma ji. Let me tell you, prior to becoming IG, when I was DIG, I was principal of Himachal Pradesh Police Training College. And I used to impart training to the new recruits, sub-inspectors, inspectors, and DSPs. So I have been closely associated with the type of training being given there. So because of my inclination towards yoga, many activities were incorporated in the training of policemen, and a lot of focus was given on asana, pranayam, and meditation. Though, as I said, yoga is a complete philosophy, and unless you clear the first step, that is yam, then coming to second niyam, and then asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. So you cannot achieve the state of samadhi unless you have passed or successfully completed the first step. So for an ordinary person, it is not so easy to achieve the level of samadhi. But yes, the byproduct of yoga is a good health. Good physical and mental health is the byproduct of yoga, though it's not the objective of yoga. Okay. But one of the byproducts is good physical and mental health. So this is achieved through asana, pranayam, and meditation. Before meditation, you have to do dharana. So what we did is, instead of PT, of course, PT has to be there for physical fitness and elastic body agility in the body. But we incorporated asana, pranayam, and meditation in the training schedule of the policeman, and since then it is carrying on. Now that training has proved handy, and even during this pandemic, since last 1.5 years, Himachal Police, like any other police, is struggling on the roads and on the streets to deal with the pandemic situation. And you will be pleasantly surprised to know that though our policemen are working on the roads, working on the ground, but they also got infected. But because of the immunity level that they developed because of yoga, pranayam, and meditation, they have developed that our fatality rate has been almost zero, not even 1%. And this has been possible. This has been possible because we carried forward that training module on meditation and all in the battalions and district police lines also. This last 1 year, I am IG Armed Police and Training. So all the armed police battalions are under me. So I have replicated those whole modules in our battalions also. So whenever our people are there in the battalion campus, they are almost daily following the asana, pranayam, meditation. Okay. So similar practice has been emulated by the district SPs also. So this various yogic activities have helped a lot, and our people have been able to cope up with the stress and strain of the day-to-day policing, and we have been able to maintain their good physical and mental health. I think I've been. Thank you very much. And I don't want to refer to any particular incident, but there have been certain incidents where the stress level goes up due to certain reasons. And I think yoga will definitely help them to control themselves, control their anger, control their stress and anxieties. Thank you very much, sir. Mr. Sharma, I know you may be referring to one or incidents. You know, the basic requirement is that if somebody is into some bad habits like over alcoholism and all those things, so to gain the maximum benefit from yogic exercise, there are certain preconditions. You know, you cannot be addicted to alcohol or drugs and all, and simultaneously by doing meditation, you can reap benefits of meditation. So exceptional cases are there here and there.
So we should not feel that yoga could not achieve the desired result in such instances, because they have not complied with the minimum requirement Yes, yes. that yoga requires. Hmm. I think Definitely. You're right. this should I be agree with you. I agree with you, sir. all right. Yeah. Exactly. Okay, thank you, sir. Now, moving to the next question, we have one question from our student, Amit Limbu. So he wants to ask, how can we connect yoga and personality development to younger generation, especially in this type of environment where all the youth are busy with their gadgets? Well, this type of pandemic is unprecedented in human history, and it has created a lot of devastation, lot of damage to entire humanity. But I must say that with the help of latest gadgets and the technological intervention, we are able to remain connected with the rest of the world. This webinar itself is a great example. We don't know where all we are sitting. You may be sitting somewhere else. BC Saab is sitting in Solan. I am sitting in Simla, and different people are sitting and speaking from different locations. So technology has totally changed the paradigm. It has made the world so connected. So therefore, if we use the technology in correct manner, you can do online courses from Oxford University, Harvard University. You can through YouTube, you can practice yoga. You can see the people on Indian Idol. I see that 6-7 years old boys and girls, they are learning dance and are achieving such level of expertise that they are going to the this platform, big platform, and achieving first, second, third position at national level. So it is up when the positivity comes in your mind through yogic exercises, then you use your energy, you use your time in positive manner and achieve the desired result. But as you know, technology is a double-edged weapon. Somebody can use technology for better things, and somebody can use technology for harming himself or for harming the society. It's a double-edged weapon, and there comes the role of yoga. When you imbibe the philosophy of yam and niyam, when these philosophies are imbibed in you, then you use your time and energy and resources for self-good and for the good of society. Thank you, sir. You have very well answered the question. So we have another question, and the student wants to ask, how can yoga help us in building our career or better focusing on our career? How can we better focus on our career if we go for yoga? You see, as I discussed during my speech, dharana deals with the focus on any point. When you concentrate your consciousness, that is dharana. So with regard to students, there is a saying ki, that focus is so important that if somebody doesn't do well, then it is said ki his focus was not right, probably he was out of focus. So dharana improves the focus of everybody, including the students. So when you practice dharana, then your focus is improved, and when you concentrate on your subject, then your assimilation is more. You can uh, learn more, and you can learn faster, and that can give you the desired result. Yes, sir. Thank you so much. It is absolutely right that yoga teaches us discipline in life. So if we are disciplined and we are focused, we can definitely achieve heights in our career. So moving on to the last question for the day. So another student wants to ask,
that with the even for the students and even for the working professional, maintaining a work-life balance is very difficult these days. So we are all busy in our life, working day and night for our careers. So how can we take out time for yoga if we don't have time for even our families? So life is getting difficult. How can we incorporate yoga into our daily routine? Any tips on that, sir? You see, everybody has got 24 hours. Nobody has got more than 24 hours time in life. So, so I think when our honorable Prime Minister can follow yoga on daily basis, I believe he unfailingly does performs yoga every day. And there are many people, great people, who are following yoga on daily basis. Then there is no reason why a student cannot follow yoga, why a grihasti, why a householder cannot follow yoga. All that is required is time management. So you have to, if you have to go to office at 10 o'clock, certainly if you wake up at 9 o'clock and quickly go to get ready and rush to the office, then you don't have time. But if you get up at 4 o'clock, you can do lot many yoga, meditation, or everything, and you can plan for the day what you have to do in the office, what meetings and seminars you have to attend, whatever you have to do, you can plan in advance, you can prepare yourself well, and there also your performance increases. So yoga is not an impediment in your life, in your career. It is a force multiplier. It adds to it enhances your ability, it enhances your capacity, and it enhances your ability to deliver results. So you have to find time, you have to make adjustment, and that is why I had said right in the beginning, Lord Krishna said, Samatvam Yoga Uchyate. You have to, bring that balance in the life. You have to find that balance between your work, your family life, your personal life, your social life, your cultural life. So everything has to be, managed in such a way that there is harmony. They do not bisect each other. Harmony can be achieved when you start thinking in a yogic way. So it is possible. Thank you so much, sir. You have very well answered all the queries of the students, and I'm sure the students will get some insight into how yoga can be a way better thing than what they think about it. So, thank you so much, sir. It was really nice to have you here with us today. It was a wonderful talk, and I'm really honored to have you here. So, on behalf of the university, now I would like to thank Mr. Jaiprakash Singh, Inspector General of Police, Himachal Pradesh, to bestow his valuable time and give his gracious presence for this webinar. I would like to thank Professor Dr. R.K. Chaudhary, Vice Chancellor Venkateshwara Open University, and Pro Chancellor A.P. Goyal Shimla University, Honorable Vice Chancellor A.P. Goyal Shimla University, Professor Dr. Ramesh Chauhan, esteemed Registrar A.P. Goyal Shimla University, Dr. Anil Pal, our guest faculties, and other esteemed people who are all here with us in the webinar. I thank you all. I hope you have enjoyed this session today. And with this, I would like to end the session. Thank you so much. So I'm looking that there are so many participants from various universities. I'm looking Dr. Rasmi Gujarati from the City University. So very, I mean to say, people have been attracted by the name of Singh Sahab. And Sahab, आपने जो इतने सिलसिलेवार ढंग से योग की व्याख्या की है, वो काबिले तारीफ है. मैंने भी बहुत सुना है, बहुतों को सुना है, एक संत योगी भी हैं और आजकल बड़े बड़े नाम भी हैं, लेकिन आपने जिस सरल शब्दों में और सबसे बड़े जिस सिस्टमेटिक योगिक वे में आपने योग को जो प्रेजेंट किया है, वो काबिले तारीफ है. और इससे अच्छा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे इवन यंग टीचर्स को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है जो योग से वो जुड़े और योग को सरल भाषा में समझ के अपने जीवन में उतारे. तो आपका फिर से धन्यवाद है सर, बहुत ही अच्छा लगा. इट वाज माइंड ब्लोइंग.
Thank you, sir. And you gave me such a wonderful platform and such enlightened audience. I am thankful for that, that people have been very curiously and patiently have been listening to me. And even I feel benefited by great remarks that Vice Chancellor Saab have made, and many other people have made the remarks and compliments. I'm really honored by that, sir, humbled by that. And once again, thanking everybody so much and for this great opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, sir.